Question number 1. The presence of high number of parasite in the blood is infestation, high blood cell count, parasitemia, parasite load. Correct answer is option 3. Parasitemia is the indication of high number of parasite in blood. Question number 2. Parasite infection are most common in winter season, summer season, autumn season, both 1 and 2. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। समर सीज़न के अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होती हैं और इनके चांसेस होते हैं 62% तक समर सीज़न में, जबकि 28% तक चांसेस होते हैं विंटर सीज़न में। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सिंसिशियल स्ट्रक्चर? इंटरन्यूरॉन, skeletal muscle, Leydig cell, all of these. Correct answer is option 4. Interneuron, skeletal muscles, and Leydig cells. These are syncytial structures present in human body. Question number 4. Parasite which infect humans are commonly anaerobic, facultative, obligate, intracellular, none of these. Correct answer is option 3. Parasite which infect humans are mostly obligate intracellular parasites. Question number 5. Family of enzyme present in mitochondria that is responsible for oxidative phosphorylation. Kinase family, cytochrome P450 family, or peptidases Rab520 family. Correct answer is option 2. Cytochrome P450 family is present in mitochondria. Mitochondria के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होती है और इसका काम है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट इज accomplished in vector, intermediate host, definitive host, none of these. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। पैरासाइट की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो कंप्लीट होती है डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट में, जबकि ए सेक्सुअल फेज़ कंप्लीट होती है वेक्टर या इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7। हीमोग्लोबिन शोज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ 3 and 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। हीमोग्लोबिन शोज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8। Cell signaling molecules are produced by marker genes, housekeeping genes, constitutive genes, facultative genes. Correct answer is option 2. Cell signaling molecules are produced by housekeeping genes, जबकि marker genes produce करते हैं हार्मोन्स को। Question number 9. Which of the following is a precursor of eicosanoid? Eicosanoids are lipid-based signaling molecule. Option 1 है linoleic acid, arachidonic acid, arachidic acid, none of these. Correct answer is option 2. Arachidonic acid is essential fatty acid और ये प्रिकर्सर का काम करता है फॉर इकोसोनाइड्स जो कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज इज प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल? ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंटरल्यूकिन, बोथ 1 and 2। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3। इंटरल्यूकिन एक्चुअली साइटोकाइन की एक टाइप है और साइटोकाइंस प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि ऑप्शन 1 ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये दोनों लिपिड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11। The mode of transport not used by signaling molecule: paracrine, autocrine, endocrine, juxtacrine. Correct answer is option 3. Endocrine transport mostly यूज़ करते हैं हार्मोन्स, जबकि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन मूवमेंट ट्रांसपोर्ट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Symptom which is common in both diabetes mellitus and diabetes insipidus: polydipsia, polyuria,
glycosuria, both 1 and 2. Correct answer is option 4. Diabetes insipidus और mellitus के between जो common symptom हैं वो polydipsia और polyuria हैं. Polydipsia means patient feel greater thirst, while polyuria means frequent urination. Question number 13. Diabetes insipidus is a disease that is associated with pancreas, pineal gland, adrenal gland, pituitary gland. Correct answer is option 4. Diabetes insipidus is a disease that is caused by underproduction of ADH hormone from the posterior pituitary gland. Question number 14. Alpha cells of pancreas produce which hormone? Insulin, glucagon, somatostatin, none of these. Correct answer is option 2. Pancreas के alpha cells produce करते हैं glucagon, जबकि beta cells से produce होता है insulin. Question number 15. Which type of diabetes is caused by an autoimmune disease? Type 1, MODY, type 2, none of these. Correct answer है option 1. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर जो है वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाती. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. Type 1 disease is caused by autoimmunity. Question number 16. Which is not the cause of diabetes type 2 disease? Insulin insensitivity, failure of insulin production, failure of insulin utilization, disturbed ratio of insulin to glucagon. तो इसमें जो कास नहीं है डायबिटीज़ इन टाइप 2 का, तो वो है ऑप्शन 2. इंसुलिन प्रोडक्शन टाइप 1 के अंदर नहीं होती. टाइप 2 में इंसुलिन प्रोडक्शन होती है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पाते सेल उसको. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है. Question number 17. Somatostatin is produced by which cells of pancreas? Alpha cells, beta cells, gamma cells, delta cells. Correct answer है option 4. Delta cells of pancreas produce somatostatin और ये somatostatin अल्फ़ा और बीटा सेल्स इनको स्टिमुलेट या इनहिबिट करता है. Question number 18. Total lifespan of insulin is 2 to 4 minutes, 24 hours, 20 minutes, 3 days. Correct answer है इसका option 1. Total lifespan of insulin is 2 to 4 minutes. Question number 19. Which hormone which is involved in sugar metabolism? Insulin, glucagon, growth hormone, all of these. Correct answer is option 4. All of these, insulin, glucagon as well as growth hormone, they regulate sugar metabolism. Question number 21. Which of the following is a transporter of ADH? Neurophysin 1, neurophysin 2, riboflavin, none of these. Correct answer is option 1. Neurophysin 1 is the transporter of ADH, जबकि neurophysin 2 is the transporter of oxytocin hormone. Question number 22. Osmotic pressure that is induced by plasma protein in the blood is called solute potential, filtration potential, oncotic potential, blood pressure. Correct answer is option 3. Oncotic potential is a type of colloid or osmotic pressure that is induced by plasma proteins. Question number 23. Mitochondrial DNA is always in nature. Paternal, maternal, both of these, none of these. Correct answer है इसका option 2. Mitochondrial DNA always comes from the mother, so it is maternal in nature. Question number 24. Total number of genes present in the genomic DNA is 20,000, 25,000, 30,000, 10,000. Correct answer है इसका option 1. Almost 20,000 genes are present in genomic DNA.
Question number 25. Epigenetic changes are in nature structural, heritable, functional, both structural and heritable. The correct answer is option 3. Epigenetic changes are functional in nature and they are non inheritable. Question number 26. Silent mutations are type of mutation: insertion, deletion, substitution, translocation. Correct answer is option 3. Silent mutations are type of point or substitution mutation. Question number 27. Which of the following is a character of a population? Mutation, epigenetic changes, SNP, none of these. Correct answer is option 3. Single nucleotide polymorphism represents the character of a population. Question number 28. Human and pig insulin are different in only amino acid. One amino acid, two amino acid, three or four amino acid. The correct answer is option 1. ह्यूमन और पिग इंसुलिन के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड का है. Question number 29. Which of the following is an example of most highly conserved genome? Mitochondrial genome, ribosomal genome, nuclear genome. और इसके साथ एक और ऑप्शन है both 1 and 2. तो correct answer is option 4. Mitochondrial genome as well as ribosomal genome both are highly conserved genome. Question number 30. Glucose level of a healthy person during fasting is 100 milligram per deciliter, 50 milligram per deciliter, or 125 milligram per deciliter, or 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1. ग्लूकोज लेवल ऑफ हेल्दी पर्सन ड्यूरिंग फास्टिंग इज़ 100 mg per deciliter. Question number 31. When the DNA is present in free state, it acts as structural DNA, functional DNA, structural and functional DNA. None of these. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2. जब डीएनए फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है देन इट एक्ट्स एज फंक्शनल डीएनए, और जब ये कंबाइंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है देन डीएनए एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल डीएनए. Question number 32. Which of the following is an example of a structural DNA? Chromatin, nucleoid, nucleosome, nucleotide. Correct answer है इसका option 3. Nucleosome is example of structural DNA क्योंकि इसके अंदर DNA जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, अटैच होता है. सो करेक्ट आंसर है option 3. Question number 33. The number of histone proteins present in a nucleosome structure: 4 pair, 8 pair, 2 pair, 6 pair. Correct answer है इसका ऑप्शन 1. टोटल 4 पेयर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. टोटल प्रोटीन्स 8 होते हैं जबकि पेयर के फॉर्म में 4 होंगे. तो 4 पेयर्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोस्टोम स्ट्रक्चर. Question number 34. Number of amino acids have been identified so far in nature: 100, 500, 20, 22. Correct answer is option 2. Roughly almost 500 amino acids have been identified so far in nature. Question number 35. Number of unstable protein present in histone octamer: 3, 5, 6, 2. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 4. हिस्टोन ऑक्टामेर्स के अंदर जो अनस्टेबल प्रोटीन्स हैं वो 2 हैं जबकि स्टेबल प्रोटीन जो है वो 6 हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज? माइटोसिस, इंटरफेज, म्योसिस, बोथ 1 and 3. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2. जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन interface. Question number 40.
function specific proteins are synthesized in which phase? G naught phase, G2 phase, G1 phase, S phase. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3। G1 फेज़ के दौरान फंक्शन स्पेसिफिक प्रोटीन सेंथिसाइज होते हैं लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स, जबकि G2 फेज़ के दौरान डवियन स्पेसिफिक प्रोटीन्स सेंथिसाइज होते हैं लाइक टिब्यूलिन प्रोटीन। Question number 41. The structural unit of DNA is called nucleoside, gene, nucleotide, none of these. Correct answer is option 3. Nucleotide is the structural unit of DNA, जबकि DNA का जो functional unit है वो gene है। Question number 42. Structure of nucleotide is maintained by nitrogenous base, pentose sugar, phosphate, none of these. Correct answer है इसका ऑप्शन 2। पेंटोज शुगर जो है वो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड के जो फंक्शंस हैं दैट आर परफॉर्म्ड बाय नाइट्रोजनस बेस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। Question number 43. What enzymes are involved in RNA interference? Primase, DROSA and dicer, RNA polymerase, both 2 and 3. The correct answer है इसका option 2. DROSA and dicers are the two enzymes which are involved in RNA interference mechanism. Question number 34. सॉरी 44 यहाँ पे आना था। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच टुगेदर, आर ज्वाइंट टुगेदर बाय मीन्स ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। Question number 45. The difference between sugar molecule of DNA and RNA is absence of nitrogen at carbon number 3, presence of nitrogen at carbon number 2, absence of oxygen at carbon number 2, or presence of oxygen at carbon number 3. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3। डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जो शुगर है डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, जबकि आरएनए में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है।